Hi guys, welcome back to Trademanza's weekly series, the stock market recap. In this video, we bring to you all the interesting events of the market from the last week and where Nifty could be headed in the coming few weeks. Before we get started with this week's video, do subscribe to our channel, like our videos and switch on notifications so that we can keep bringing you interesting content like this. Also download our app to try out our fun games and quizzes. इसी के साथ अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते की वीडियो में हमने बोला था कि निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे है बिकॉज इट वाज जस्ट बिलो द ब्लू लाइन जो 20 डे मूविंग डे एवरेज है। अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से यूजुअली मार्केट रेजिस्टेंस लेके या तो गिरता या बढ़ता। अभी हमने पिछले 4 दिन में ये देखा है कि मार्केट ने ये 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। अब अगला रेजिस्टेंस 17,400 लेवल्स पे है। अगर एक मूविंग एवरेज लगा के देखा जाए तो व्हाट वी वुड वांट इज कि अभी मार्केट 17,200 से थोड़ा सा गिर के 17,100 लेवल को एक बार रीटेस्ट करे तो मे भी कहा जा सकता है कि ये एक हेल्दी अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा अगर आर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखा जाए तो पिछले महीने फरवरी के आसपास मार्केट ने 17,400 लेवल पे रेजिस्टेंस ली थी और अभी भी वहीं पे है, जहाँ पे अगर देखा जाए तो पिछले 1 घंटे की कैंडल्स ने लगातार लोअर हाइज बनाए हैं विच इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। बट अगर 17,100 पे मार्केट सपोर्ट लेता है तो देन इट कैन ब्रेक 17,400। फिर अगला टारगेट रहेगा 17,600 और 17,800। ऑन द डाउन साइड अगर 17,100 सस्टेन नहीं होता है तो सबसे पहला सपोर्ट रहेगा 16,800, उसके अलावा 16,600। अगर ऑप्शन चेन की तरफ देखा जाए तो अभी भी 17,000 जो काफ़ी क्रूशियल लेवल है उस पर काफ़ी सारे पुट्स अक्यूमुलेट हो गए हैं विच मीन 17,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और अगर हम लोग 17,200 लेवल्स को देखें तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ पुट्स सोल्ड हैं इट इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉल्स। इसका मतलब है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट अगर 17,300 को देखा जाए तो 17,300 पे इट्स वेरी क्लोज। यहाँ से डिसाइड होगा कि मार्केट किस साइड पे जाएगा एंड 17,500 को तो देख के पता चल ही रहा है कि ये रेजिस्टेंस रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। एचडीएफसी बैंक के ऊपर फाइनली आरबीआई ने बैन हटा दिया है। द बैन वाज कि एचडीएफसी बैंक नए क्रेडिट कार्ड्स नहीं इशू कर सकता है। नाउ एचडीएफसी बैंक विल बी एबल टू स्टार्ट इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स अगेन। इसकी वजह से स्टॉक हफ्ते में 6% अप था एंड ऑन 11th मार्च 2022 आरबीआई ने सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए अंडर द बैंक्स डिजिटल 2.0 प्रोग्राम। So now the bank is going to target the digital space very effectively. अगली न्यूज़ की तरफ मूव किया जाए तो इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी एल को दुबई में भी काम मिलने लगा है। द पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ऑफ एल हैज़ बैक्ड ऑर्डर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। उसको यूएई में द बिजनेस हैज़ वन ऑर्डर्स टू सप्लाई एंड कंस्ट्रक्ट शंट रिएक्टर्स इन 132 किलोवाट सबस्टेशंस। एंड उसके अलावा उन लोगों को इज ऑल्सो दे आर इन्वॉल्व इन अपग्रेडिंग द वाटर सप्लाई नेटवर्क ऑफ दुबई। The company was awarded a project to supply, install, and commission a water distribution network and large meter connections in Dubai. This scope includes water distribution networks of 137-kilometer GRE pipelines, micro tunneling works, and associated mechanical and electric works. इससे ये पता चल रहा है कि L&T is not just growing in India, but the company is also a very big presence globally, and इनको बहुत जगहों पे अलग-अलग टाइप के काम मिल रहे हैं। Another Indian company which is a big global leader, TCS. सिंगापुर एक्सचेंज ने TCS को सिलेक्ट किया है टू पावर द NSE IFSC SGX Connect in Gift City. TCS said on Wednesday that its flagship financial platform, which is TCS BAN CS, will be deployed by the Singapore Exchange to power the NSE IFSC SGX Connect. The program will connect to NSE IFC, a fully owned subsidiary of the National Stock Exchange of India, for trade execution and clearing of Nifty product on behalf of its members in Singapore and globally. ये NSE IFSC अगर आपने सुना होगा तो this is regarding how Indian investors को finally they have been allowed to invest in US stocks. मूविंग ऑन टू सम इकोनॉमिक न्यूज़। इंडिया में इन्फ्लेशन फरवरी में भी काफ़ी बढ़ा है। डेटा रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑन मंडे शोज की होलसेल इन्फ्लेशन हैज़ रिजन बाय 13% इन फरवरी। पिछले महीने इट वाज 12.96%, मींस इन्फ्लेशनरी प्रेशर अभी भी बढ़े जा रहा है एंड इंडिया आल्सो स्टार्ट्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट सून, अदरवाइज ये इन्फ्लेशन बढ़ता ही रहेगा। हाउएवर दिसंबर में इट वाज 13.56%, व्हिच मींस दैट द नंबर्स आर नाउ स्लाइटली बेटर। गवर्नमेंट का ये कहना है कि द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन फरवरी 2022 is primarily due to rise in prices of oils, basic metals, chemicals and chemical products, which is mainly because of the global oil shortage जो ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से हो रहा है। Moving on to some very important global news. In its Fed meeting on Wednesday, the Fed has increased the interest rates for the first time since 2018. The US Federal Reserve announced its first rate hike in more than 3 years.
The Fed announced at the conclusion of its two-day meeting on Wednesday that it will increase short-term interest rates by quarter of a percentage point. This is nothing surprising. ये market में already priced in था, and now interest rates have been increased from 0.05% to 0.03%. And the Fed ने ये भी बोला है कि by the end of the year the interest rate from 0.3, the target is to reach 1.9%, which would mean कि अगले आने वाली हर मीटिंग में एक 0.25% का हाइक किया जाएगा. Fed Chair Jerome Powell, speaking after the end of the two-day policy meeting, said the economy is strong enough to weather the rate hikes and maintain its current strong hiring and wage growth. He further added that the Fed needs to now focus on limiting the impact of price increases on American families. Moving on to the next very surprising news is that China is now suffering from another wave of COVID. First COVID deaths in China have happened since January 2021, and there has been a 12% rise in global cases. And now, many people are also forecasting that the next wave of COVID is going to hit India in the month of June. The UK Health Security Agency said that daily COVID 19 cases in England could be growing each day, as the estimated range of country's COVID reproduction R number is between 1.1 and 1.4. The global deaths related to the coronavirus plunged by a fifth despite the continued resurgence of the pandemic this week. The average number of daily infections increased by 12% to 1.8 million as Western countries continue to see a rebound. COVID cases in France increased by 35%, while Italy and Britain were up by 42% each. In China, recently a lockdown has been announced and more than 50 million people are now quarantining as the company starts to struggle with COVID again.